Hello everyone, welcome to my channel. And yes, after quite some time, I'm back with the reaction. So yeah, I had a family medical emergency, so that's why I was not able to record. But yes, everything is like now under control. Not fully like normal, but under control. So yes, so I know part three of Nayaab album listening was there. What can I do? 17 गाने हैं भाई, 17 गाने हैं, बहुत लंबा album है. So yes, now today right now I will be watching the like not watching, literally listening to the remaining songs. So we ended basically at Kohra last time. So Jua, Rajdhani, Chidiya Udd, Batti, Teen Dost and Marne ke Baad bhi. So these are the songs I will listen to and very excited because well this album is something man. This album is something. मैं ना सुन के तो I feel मैना और अनाड़ी मैंने इतना सुन लिया है ना, it's too much. It's too much. Like specifically Maina though I've lost count how many times I've listened and probably cried also. So yeah, very excited to finish off this album. I know I saw a lot of comments that Bella ka third mixtape aaya hai. Now again that has 10 songs. So I'm gonna like I'll probably react to one or two first and then because I want to take a break from long format reactions right now. So I'll see if I have to like you can give me the best 3 songs from that mixtape कि नहीं ये 3 पे तो आप पक्का react करो and then I'll see. Then I'll see. So yeah, so starting with Jua, I'll put the timestamps for every song so you can watch this at one go or you can skip to your favorite song from this particular set. Let us begin. So they are gonna be participating YouTube fan fest na, so they have this fan meet thingy na, so I applied for it but पता नहीं मिलेगा कि नहीं. अब 29th तक अगर mail नहीं आई तो of course I won't be part of this. I hope I get selected for the meet and greet. We'll see. If I do, I'll be very happy. So yeah, let us begin. Says the one my heart. Ooh, they've put some classical touch here. मैंने बोला भागो दूर मत, खोया क्या तू पूछ मत. वो मारना चाहते बड़ा हाथ, पर नहीं जानते उसकी कीमत. चांद के पत्ते पे, चांद के सट्टे पे, बाप करे बैक फिर बैक. काश लग जैकपॉट डैड, बाप की किस्मत ट्राइस तेरा चाहिए जो जीते जब भी कैश मेरे गंदी ऐप डुबा पूरी फैम को तो बोली माँ मुझे दूरी रहे से. वो बोले वो जगह जाए पहाड़ में सत्संग, मैं बैठा वहाँ ताकि सही हो सब मिले तुम्हें जो भी चाहिए तब वापस दूँ वो सारे पैसे माने खैनी गिरवी रखी मुझे देते जब गिरे केस तो पीछे पड़े फेंको मुँह पे पैसे बोलूँ आगे कहियो मत ये चूहा लता है कुआ तलब है ये चूहा लता. Oh my god. है कुआ तलब है ये चूहा लता. मेरे भी बनी मेरी मजबूरी है कुआ तलब है ये मांगे कैसे करूँ सब ये चूहा लता. पूरे तेवर आगे रूलर टेबल घुमा चाहिए मुझे एक और तेरा केवल खाली खाली करो खाली करो ताश पर को मैं माना राज करा बच्चे या फिर शराब पता मुझे बुरे नशे पूरे फंसे. Dude, the delivery of the bars. लगी आग सभी चले खड़ा हूँ साथ चाहूँ की बस न बने मजाक मैं तेरा सब और तू मेरा बाप नमस तो दे जो की लत से परे रहे जो डर जाए fuck that मैं वो लौंडा नहीं है बस सट्टाबाजी बस की नहीं है माँ के कुछ वादे हैं जो निभाने सच है कि यहाँ पे चूहा लता है कुआ तलब है ये चूहा लता है कुआ तलब है ये चूहा लता. मेरा भी बनी मेरी मजबूरी है कुआ तलब है ये मांगे कैसे करूँ सब ये चूहा लता. पूरे तेवर आगे रूलर टेबल घुमा चाहिए मुझे एक और तेरा केवल खाली करो जेबर ये चूहा लता. Amazing. ये हल्का सा जो क्लासिकल वाइब दिया है ना बहुत ही प्यारा है. ओह वाओ what a start. Wait. पहले तो जुआ के बारे में बात करते हैं. I kind of take this song in probably 2 ways.
like from the first listen I could be like maybe अगर मैं 2 और 3 बार सुनूं तो शायद मुझे और भी कुछ context समझ आए गाने का. But in the first listen and whatever I could understand from the lyrics is that I sort of took it in two ways. One is that this is a song which is from a perspective, which could be from a perspective of anybody who is saying that the life is like a gamble. मतलब ये पूरी जिंदगी ये जुआ है. So sometimes you win big, sometimes you put all of your chips in and then you lose, right? So I feel that this can probably, like, if I put myself in their shoes and start thinking about this song, it probably is applicable to me also, and it probably is going to be applicable to you guys also. So that's one way I look at it. The second way that I look at it is that actually there are 3 ways that you can look at the song. One is can be applicable to anybody. Second is specifically both of them are playing a character who are gamblers, like who have this addiction, right? And whatever they do, it's like they cannot stop playing this game of gambling, and sometimes they win, sometimes they lose, and that's the entire journey. That's very specific. I feel जो मैंने पहले बोला कि it's more related to life, like life is a gamble. That could be the third interpretation, is that they are specifically singing about themselves, like this industry, being in this industry specifically for them, the entertainment industry, the hip hop scene. Choosing this profession was like a gamble. Choosing this profession was like a gamble, because if you see Seedhe Maut's story, from whatever I have understood, is that they really did not get any backing or anything like support from people around them, that do what you wish to do, and we are standing behind you and stuff like that. मतलब लोगों ने बोला, मतलब अगर आपने कुछ करना चाहा तो they probably, the society, people around you said that no, this is wow, how पैसे कैसे कमाओगे इससे. So they gambled away their dreams to be in this industry, and of course they have won. But जनरली अगर आप एक आर्टिस्ट को देखो, ऐसा नहीं होता ना, सब तो टॉप पे तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं. कुछ लोग की जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली होती है, कुछ लोग की जर्नी ईजी होती है. सो इट्स लाइक इट्स दिस एंटायर थिंग ऑफ यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस हिप हॉप कम्युनिटी, और trying to make a name for yourself in any sort of industry is like jua. It's like jua. And it's so, and why I was saying in first ki the first perspective is like कि आप किसी भी आप अपने आप को डाल सकते हो इसमें, like life is like a gamble. For me, for example, leaving my secured corporate job and deciding to do this full time is a gamble. It's a big gamble. मैं तो जुआ खेल रही हूँ, मैं अपनी financial security के साथ मैंने जुआ खेला. So काम भी कर सकता था, नहीं भी काम कर सकता था. अब काम कर रहा है, but आगे जाके maybe I fail. We don't know. It's a gamble. It's a gamble. So that way I was like, yeah, that way it's relatable. So that I see the song from that perspective. Coming to the production, I'm sorry, for me in this album till now, Says has completely won me over. Completely. Just that subtle classical, sound gave so much depth and so much finesse to the song. So different. मुझे beat तो बहुत अच्छा लगा. But just the way the music was arranged was fantastic, and on top of that, their delivery of the song, it's so beautiful. There इतने variation है, मैं तो बोल भी नहीं सकती. मतलब it's just, this song is a really well put together song, very very different. जिस तरह से वो लोग rap कर रहे थे, उनका cadence हमेशा उनका vocal, like their tonality, the way they are delivering their lines, it was very very different. Like every verse sort of had a different kind of emotion, and they were switching it up in the emotions. That was great. What a great start to this video. Really really nice song. And from this album, I find that they are giving way too many perspectives to us about life. It's not just about, usually क्या होता है कि आप एक journey दिखाते हो एक album के through, जो वो दिखा रहे, they are talking about their journey and all of that. But there are songs which talked about things like, finding yourself, finding your true nature, talking about your surroundings in general, talking about life in general, standing up for your friend. There are so many aspects to this album. So it's a mix of everything. And it's like, this album, I would say, is a slice of life. If I have to categorize this album as something, I would say the category is slice of life. You can
take whatever slice that you seem fit that I relate to this aspect of the album. I'm sure maybe, you know, if somebody is going through a very tough time, oh my god, a song like Maina is going to be so freaking relatable. You know, if somebody is having a tough time with your family, जहाँ पे parents आपको समझ नहीं रहे हैं, there is family issues, a song like Anadi, oh my god, that I can't even you know, begin to comprehend how beautiful this album is. It's really a great album, amazing. And you know, for a song like Jua, somebody who has risked so much and trying to do something which is different from the norm, it's like, yeah, Jua is going to be relatable to you. मैं तो अपनी जर्नी sort of सोच रही थी जब मैं गाना सुन रही थी. That's how beautifully the song is transporting you. Beautiful, amazing, and just their delivery. I think यहाँ पे the way they were rapping, I really like that. So yes, we're going to move on to the 13th song, which is called Rajdhani, and yeah, let us begin. Rajdhani, तो ये तो दिल्ली से है दोनों, so I'm guessing जहाँ से वो आए हैं, maybe they're talking about how they grew up here. We'll see. Let us begin. गाली नहीं दूंगा इसमें, ब्रो, ठीक है? गाली नहीं दूंगा बोल रहा है. Yeah. चेक बदल. राजधानी पैदा हुआ तुझसे, जिंदगी तुझ में बिता दी. पे माँ बहन पर सबा पे बहन की और माँ की तेरी माँ का भूस. Fuck it, फिर से. राजधानी 96 के खत्ते पे है ले रहे समाधि. कुछ बच्चे जो चरम गरीबी और कूड़े से वाकिफ, एक कचड़े के पहाड़ में लोहा पीने से श्रापित, तो पका के चूहे खाने में उन्हें शर्म नहीं आती. जब सताती भूख और पीने को मिले बस काला पानी है. ये बातें नहीं बनावटी, मन घड़त इत्यादि. बूचड़ खाना बन रहा है तो हड़ताल पे है माजी. या बदबू है जहरीली प्लास्टिक और कटे मांस की, पर किसको पड़े फर्क, देख क्या हालत है जमुना की. जमुना पारी नस्ल तेरी अकल में नहीं आती, तो तू घूमे जितनी दिल्ली, तू दिल्ली जाने नहीं आती. राजधानी इनकलाब जिंदा तो अमर रहे. वो जो हो चुके शहीद, खा के गोली या फांसी. फक्र से ताकि तू चख सके आजादी, पर तू बन चुकी है धर्म और राजनीति की जागीर. वहाँ पे चलती नहीं मोहब्बतें, जहाँ पे चलती है लाठी. मरते हिंदू मरते मुसलमान, मरती तेरी संतानी, पर तेरे को पड़े नहीं फर्क, तू खाती नमक है सरकारी, है ना? राजधानी मैं बोलूं सच, तू कह देगी मुझको आतंकवादी, पर तू भर ले चाहे जिसके मर्जी कान. तुझको है प्रणाम, पर रहेगा इस जबान पे जय जवान और जय किसान. राजधानी 100 सवाल है तुझ पे, लेकिन है एक भी जवाब नहीं. पैदा हुए तुझसे, जिंदगी तुझ में बिता दी. सीखा जो भी सीखा तुझसे, तुम तेरे जितना खूंखार भी. ओए कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही? ये क्या? ये जानती नहीं क्या, जानता नहीं? ये ओए इधर आ, ओए राजधानी और राजधानी, ओए राजधानी और राजधानी, ओए राजधानी और राजधानी, ओए राजधानी और राजधानी. राजधानी बाप चांदनी चौक से और माँ पहाड़ी घूमा. मैं काफी फरीदाबाद से भिवानी नैनी तक रखे नाते पर, ये गाड़ी रुकी वापस आकर कहाँ. राजधानी चाचा तो रुकमान गेट की सुनाते थे कहानी. बस आता था यहाँ दादा से मिलने, अब दादा यानी तो सबने बेचा घर जैसी चिता चली वो शानी. कांडे सब क्या परिवार है, फक में वापस आया दिल्ली, लेकिन रिश्ते नाते सब खत्म. अब ना भरे जख्म मेरी बला से तो मरे. आराम से माय बैड. आ जाओ बावे, फिर से आ जाओ. राजधानी रिक्शे वाले भाइयों के साथ ही चिल्ल मारी. रोहिणी के आधे खोखो पे थी उधारी. टट्टी क्लबों में प्रमोटर था, किसी से नहीं बिगाड़ी. सीखा गेम, धीरे धीरे कदम आगे बढ़े, पता चला हाउ टू मेक इट रेन. जीते जैसे कदम आड़े रखे था, नहीं कोई भी लेवल पे भी सेम. खुशू मैंने गुस्सा टेपा, गाना में नहीं रखा खुद ही तक ये पेन. तेरे हवा में तो लगे कि दिल्ली दूर नहीं है बे. राजधानी तूने जिंदगी दी दूसरी, दिल से हुआ भारी. कितनी रातें छत टाप कर लिखते हुए गुजारी, कितनी बातें सोच खाप या कागज तक नहीं उतारी. बैठते थे साथी मंजिल पे जब तक हो जाती थी सुबहानी. पेटे भरा बस धुएं से धुएं में कटी जवानी. बचपन कटा उन्हें रोते देख, दौलत थी बर्बादी. याद है भाई और मैं थे छोटे से लड़े जब खाना था नहीं. अब जब बैठते दोनों भाई साथ मंगवाते बस महंगी शराबी. खुश है कि 3 है घर, अभी भाइयों के शौक है नवाबी. यहाँ से गए जब हमारे ले यादी जगह नहीं. निकले दिल्ली से पर अंदर से दिल्ली निकले नहीं जरा भी. राजधानी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही? ये क्या?
ये जानती नहीं क्या जानता नहीं ये ओए कान ओए इधर आ ओए It's like Eve ओए teasing. राजधानी और राजधानी ओए राजधानी और राजधानी ओए राजधानी और राजधानी ओए राजधानी और राजधानी Says on the beat, boy. This song made me uncomfortable. This song made me actually a little bit uncomfortable. And not because of the lyrics. No, 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 no. No. Because of the cadence. That was encore. That was ABJ, I think. जो इसे राजधानी राजधानी वो जानती नहीं जानता नहीं वो वाला जो part है that was encore. Oh my god. That triggered some bad memories, guys. That triggered some bad memories of Eve teasing that yours truly have been through. Yeah. Oh my god. Oh god. But what a song. I have no words. I'm speechless at this song. What is this album? Guys! Okay. Firstly, says. This music is so freaking gritty. It was so gritty and dark. और पता है कैसा लग रहा था मतलब नाम राजधानी है बट एक जो म्यूजिक है ना फॉर मी व्हाट आई वाज थिंकिंग लाइक इट साउंडेड एज इफ कोई एक जो ट्रेन है पटरी पे चल रही है धीरे 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 ठक 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 वो वही पेस में ये म्यूजिक था पूरा गाने में इन द फुल सॉन्ग इट वाज द सेम एंड इट फेल्ट टू मी दैट या देयर इज दिस स्लो ट्रेन राजधानी चल रही है राजधानी एक्सप्रेस एंड यू नो जब वो अपने रेगुलर इंटरवल एंड रेगुलर स्पीड पे चलती है नॉट द फास्ट नॉट लाइक एट सुपर स्पीड बट हाउ इट जस्ट goes ठक 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 आता है ना एक वैसा म्यूजिक था so that's quite interesting I mean that's genius that's freaking genius oh my god wow second the song let's talk about it this I won't go line by line but actually if I was reacting to this as a standalone song I would have definitely gone through the song line by line but now I'm just going to summarize what I thought about the lyrics the first verse was more when the first verse was happening I was like अच्छा तो ये दिल्ली के बारे में बोल रहा है and दिल्ली का एक ऐसा side which is not that beautiful not that great like it's like a darker side and it's a side which people like जिसके लिए basically वो बोलते हैं ना दिल्ली बदनाम है you know जो हमें like I used to sit in Mumbai and I used to see all these news of Delhi ऐसा है वैसा है but my in-laws are in Delhi and all of that so you know I know what the city is because I used to visit Bombay से दिल्ली आती रहती थी from time to time to visit them now तो I'm here permanently hopefully let's see so of course you know कि उसमें क्या दिखाते हैं न्यूज़ में क्या दिखाते हैं and when you visit you understand what that is but there is still a bad side to it it's not like you know Mumbai is squeaky clean as a city it's not it also has a darker side so yeah every city has its good and bad but how it is projected you know like you बोलते ना दिल्ली तो बदनाम है for certain things so yeah so the way he was projecting those things about this place about the capital of our country which was really sad and then you have when oh my god just when ABJ just did that oye Rajdhani oh my god that triggered some really bad memories about the Eve teasing and all so yeah जैसे दिल्ली इन सब चीज़ों के लिए बहुत बदनाम है and it's scary that made me so like uncomfortable that made me so uncomfortable and I think that was the intention to show that aggression but the second verse was totally different the first verse was very generic but the second verse was
very personal and also showed the positive side. Second was it was a personal journey ki, you know, the city has given me so many things and stuff like that. Even if when I came in here, you know, मैं तो दिल्ली से बाहर निकल गया, but दिल्ली मेरे से बाहर नहीं निकली. All of those lines were there. So this was more like a personal journey, and how thankful he is. That was Calm. Calm तो अपना कर रहा था. You know, Calm was talking about the personal journey, while Encore was more the generic, the social message thing. कि हाँ, अगर मैंने ऐसे कुछ बोल दिया तो ना मुझे बोल देंगे आतंकवादी. Oh, those lines were awesome. Those lines, just every line was freaking amazing. That's why I said if I was, you know, reacting to this as a standalone song, I would have gone through each and every line because they are so hard hitting and so amazing. Like, this is, so the first half of this song is more like a social message kind of a song, like a more socially aware about the society and how it is perceived also, and how the bad side is also. So, but the second verse is more like a personal journey and how thankful he is to you know, for whatever the city has provided him, good, bad, but he's forever thankful. So I like how the song ends in a positive note, but then at the end फिर वो eve teasing वाला वो आ गया, मतलब, you know, थोड़ा सा वो aggressive, but that was so good. And that's what I was talking about. Like मैं जुआ में जो बोल रही थी, the way they have experimented with their vocal cords, their cadence and their delivery, it's amazing. Just this album is one of the best albums I've listened to in general. I'm saying, not just DHH की मैं बात कर रही हूँ, म्यूजिक में मैं बोल रही हूँ. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ओवरऑल, इंक्लूड एवरी जॉनरा ऑफ म्यूजिक, और दिस इज इंक्लूडेड इन दैट. अभी तो और गाने बचे हैं, बट आई एम ऑलरेडी डिक्लेयरिंग इट. दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग. Not a song which will you see these. That's what I was saying. I think in part 2 में बोला था. Not all the songs are there where you would vibe to it. Not every song has a vibe, but every song has a different intention. That's what I understood. Every song that has been put here has a different intention. कुछ गाने उन्होंने vibe करने के लिए बनाए, कुछ गाने उन्होंने हमको aware करने के लिए बनाए, कुछ गाने बहुत socially, you know, conscious है, very socially aware that so that we think about it. कुछ गाने एक point prove करने के लिए बनाए कि जैसे, you know, God code है, that this is where we stand, अपना stance रखने के लिए. So every song has a different purpose. So a song like Rajdhani is not made for us to vibe to it. It is for us to, you know, sit up and be like, okay, oh my God, that is the reaction that they were seeking, and they got that reaction from me. Definitely. So yeah, that was something, man. That was something. Wow, great. Okay, the third part is because Jua was also really dark. I would say even Kora, मतलब last time तो मैंने Kora पे ये किया था, but that was so dark. Then Jua, and now ये वाला, अब चिड़िया उड़, पता नहीं, ये तो वो गेम है, चिड़िया उड़, मैना उड़, and this उड़, that उड़. So let's see if it is. I am guessing maybe this is talking about बचपन. ऐसा हो सकता है ना कि बचपन में innocence जो होती है. Let's see, गाना सुनते. Let's listen to चिड़िया उड़. This has a driver. What is says क्या खा के ये एल्बम बनाया, मुझे बता दो प्लीज. What did he eat? हाँ, like the production of this album. The last thing I was expecting is a tribal beat. The last thing I was expecting. You're kidding me, right? You're kidding me. This is too much. चिड़िया उड़, ये चाहते हो जाए चंगा. Sorry, I paused again, but अब नहीं करूँगी इसके बाद. It's thundering now specifically. If you see, it's become a little dark. थोड़ा ये काले बादल थोड़े ज़्यादा हो गए. चिड़िया उड़ गई. Definitely बचपन का गाना तो नहीं है. ये चाहते हो जाए चंगा, हाँ ये चाहते गुड़. गोबर दंगा ढाई रखी कर दो दुनिया कुल. बन पे शाचक खुद कर पापे, यहाँ सब चलता फुल. ये एक तो डुबकी गंगा में दर पापन boy I'm good. चिड़िया चुप गई खेत, बंदे बैठे तब भी चुप. करते पापी पश्चाताप, अपनी पश्चातानी फुल. ये एक तो डुबकी गंगा में दर पापन boy His
स्पीड लिमिट 60 हूँ मैं 100 पर है जेब में ठुल्ले डीसी यार है मेरा डालेगा नहीं जेल में नियम गए तेल लेने धर्म बिके सेल में इकोनॉमी दू गिर मेरा पैसा हुए पेड़ पे यहाँ का सेठ मैं ईवीएम से मस्ती दारू दे के करूँ पेट में मछली फंसी कांटे में है जाला पूरी लेक में निवाला छीना तेरा खाना पड़ा मेरी प्लेट में ये पावर आती मेद से हेट से शुद्धता चली सैर पे प्रोपेगेंडा की देन ये नक्शे कदम में डॉल्फ के रणनीति हुई नहीं फेल ये पट्टी पड़ा के चैन से लू एक दो डुबकी गंगा में दो पापन चिड़िया उड़ ये चाहते हो जाए जंग यहाँ ये चाहते गुड गोबर दंगा ढाई न रखी कर दो दुनिया कुल बन पे शाजब खुद कर पापे यहाँ सब चलता फुल एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बॉयम है बैलगाड़ी 5 पे और खड़ी नहीं है जेब में ठुल्ले नहीं है यार ये सीधे देंगे डाल जेल में सेब के है पैसे नहीं खरीदू धर्म सेल पे और फलफरी की नफरत मेरा पैसा नहीं है पेड़ पे या फरेब मैं चुनूं मैं चुनावों में जो देता दारू पेल के वादों का ये कांटा फेंका गरीबी के लेक में और छीने ये निवाला मेरा खाना इनकी प्लेट पे फिनाइल मेरी मेज पे खिंचू नीट मैं मासूमियत गई सैर पे प्रोपेगेंडा की देन ये नक्शे कदम किसानों के लगा लूं फांसी पेड़ पे डुबा ले मेरी लाश को ऊपर आ जाएगी तैर के चिड़िया उड़ ये चाहते हो जाए जंग यहाँ ये चाहते गुड गोबर दंगा ढाई न रखी कर This is also a socially aware song. खुद कर पापे यहाँ सब चलता फुल ले एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बॉयम गुड चिड़िया चुप के खेजा बंदे बैठे तब भी चुप करते पापी पश्चाताप की पश्चातानी फुल ले एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बॉयम I really like this line. पश्चातानी फुल ले एक दो डुबकी गंगा में ली एक दो डुबकी गंगा में धो है पाप and boy I'm good. दो पापन बॉयम This song, I'm telling you, this song is to make us feel a little, ashamed of ourselves as human beings. Ashamed of ourselves as human beings. Yes, wait, this has to be one of the best tracks of this album. For the uniqueness of the sound, I swear, Seedhe को दो यार सारे awards. I don't know hip hop के कोई awards होते हैं कि नहीं. This album better win all the awards. Seedhe better win the awards for, I don't know, you guys can let me know if there are any specific, award functions or awards happening for hip hop community or not. Because this is, creme de la creme. Ekdam top of the top notch production is this album. This is the album. Oh my goodness. Absolutely. Just the पहले तो वो I did not expect that tribal वाला sound, ठीक है? And then this is, I don't know what this beat is called. Like it's very techno-ish kind of beat. I don't know exactly. I'm not a music person, guys. I don't know what it is called. Technical term क्या है उसका? So beautifully blended. And again, the cadence. My God, Calm completely won this for me. The way Calm was just rapping his verses, he completely won for me with his cadence. It was so good. It was out of this world. How much they have experimented with their own voices. इतना मैंने न में नहीं सुना था. I'll be very honest. Like the kind of, like No was a very good mixtape. Like No is actually it's like a banger. But उसमें इतना voice modulation, so much experimentation with sound, with cadence, with the flow, with delivery. It was not done there in Na. But here, literally with every song, it's like, अगर मैं ये गाने अलग-अलग किसी को सुनाऊँ ना, people will not know. Like probably I'll also get confused कि ये काम और ABJ तो है ना, सारे गाने ये उन्हीं के गाने हैं ना, उनकी आवाज़ है ना, because in every song they sound so different. They have really, really experimented with their own voices. And also, I would say, Seedhe has used just गाने में जहाँ भी auto tune use हुआ है ना, he has done it so well. He has just the mixing. I'm telling you, give all the freaking awards to Seedhe. He deserves it. Just the production of this album is too good. It's too good. It literally should be studied. How beautifully the sound mixing has been done. Different sounds have been used. It's too much. It's too much. And I really want to open the lyrics for this because I was like, wait, let me open it. My God. Okay, I've opened the lyrics. I've opened the lyrics from this website called aslihiphop.com. मैं genius में नहीं गई, but I wanted to talk about once again the contrast in the verses. It was
सी आई सेड दैट, मैंने बोला ना खत्म होने के बाद कि ये गाना है ऐसा जो हम सुने, द इंटेंशन ऑफ द सॉन्ग इज फॉर अस टू वाइब ऑल्सो, यू कैन टोटली वाइब टू द सॉन्ग, बट द इंटेंशन इज टू मेक अस फील ashamed of ourselves. Why? Because the first verse, जिस तरह से you know the verses have been said, जो lines है, it's more like you know धस जमाना. That's why I was like कि मैं एक बार open कर लेती हूँ lyrics. All his lines like you know EVM से मस्ती दारू देख के करूँ बातें मैं, मछली फंसी कांटे में, है जला पूरा लेक में, निवाला छीना तेरा, खाना पड़ा मेरे प्लेट पे. So it's like उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. So yeah, as humans we should be ashamed. So this song is made for us to feel ashamed of human behavior, because you see two human perspectives. ठीक है, तो वो बोल रहे, तो वो अपने perspective से बोल रहा है, काम is that I am doing all these wrong doings, but लू एक दो डुबकी गंगा में and धोए पाप and boy I'm good. मेरे सारे पाप धुल गए. But when you come to the next verse, when you come to ABJ's verse, it's a totally different perspective, because it's also negative. Both the इसमें ये नहीं है कि हाँ Calm is like a bad person, so ABJ has become a good person. No, here he's more like you know hopeless. He's more like hopeless because he's जैसे फिनाइल मेरी मेज पे खींचू नीट में, मौसमियत गाय सर पे, प्रोपोगेंडा की देन ये नक्शे कदम. सो ही वो सिस्टम से हार चुका है. ही इज नॉट रेडी टू फाइट. द अदर गाय इन द फर्स्ट वाज द गाय इज रेडी टू फाइंड एवरी लूप होल इन द सिस्टम एंड यू नो not giving respect to the system. यहाँ पे भी the guy is not giving respect to the system, but he's blaming it because उसको कोई फायदा नहीं हुआ. So and he's suicidal. वो इसमें लिखा था ना, oh those lines were so good. ये रहा, हाँ, नक्शे के दम किसानों के, लगा लो फांसी पेड़ पे, डुबा ले मेरी लाश को, वो भी ऊपर आएगा तैर के. माय गॉड. So his is more, so here one person has become completely hopeless. He has no trust on the system. So it's two perspectives in the sense that the common thing is that you have no perspective, you have no trust on the system. ठीक है? So one butchers it and you know stomps on everything and does his thing. The other is suicidal and you know he's like no, system is not supporting me and I am hopeless. I can't do anything. I don't have the strength to fight. That is so. So technically both are sort of you know बंधे हुए हैं. But चिड़िया उड़, no way this is a song about बचपन, because वो चिड़िया उड़ देखा तो I was like अरे ये बचपन के you know reminisce करेंगे क्या, to you know thinking about childhood memories. But no, it's not. Fantastic. What a song. What a song. Amazing. So now we're going to move on to the next one, which is Batti. Now this is featuring AB17. I don't know who that is. AB17. Also, you guys told me last time, part 2 में बोला था कि every song has a certain like a description and all. But I was checking, there is no description. There is nothing given in the description like about the context of the song or anything. It's just the credits. So let me know. Maybe I was like, maybe they've removed it. I don't know. So yeah, let's listen to Batti. Says on the beat, boy. अच्छा पेड़ पे बैठे हुए हैं. मोम की बत्ती बुझगी, छटोले लौंडों की गुड्डी सुझगी, पनौती पुतगी यहाँ पे जब इन बहन के दिनों में फुस्सी भरती. यहाँ देख तेरी बंदी चुकगी, हमारे पे कर सके तू कुछ नीलू, आड़े में तेरी फोड़ू थुतड़ी दुसाड़े में चले ना बने तू फन्ने खाए. देख तेरे बाप पे 36 काम है, दे दी किस्तों पे सलाम है. 14 को खुदा अकेले में 2 बार देख, हमें साथ खून माफ है. बड़े कंटा 49 है, क्या साला साफ सुंगलू लाइन बसों में चलते थे स्टाफ, आज बिजनेस क्लास जहाज है. मेरे बाप का राज है, इन्हें पता है मेरे सर पे ताज है. बहते चले मेरी जब जबान, ये मान सम्मान में भूल जा, बोले रैपर हमारी छाट समान है. कोई कैसे लेगा कुछ चखाड़, क्या बिगाड़ो काम तमाम जब काम नाराज है. नाम से जानते नौजवान है, पहले बयान फिर किए 2 टोर, तब तक तीनों नायाब थे. इन्हें भेजा मेरे दीन दयाल पे. ओए बत्ती टिम मार के जैसी मुझे लौंडे जल से छुप गए. थोड़े बहुत व्यूज मिले, बंदे उड़ गए. आस्ता लवीस्ता बीटी माथा पीटा बहुत, अभी बंदे भी पीटने पड़ गए. क्या माँ कसम मेरे सर पे चढ़ गए तो बेइज्जत करूंगा मैं कल को भर के. बावे चल उठा बस्ते, फूक भरू कागज में, बावे तेरी जान बख्शे, मुझे याद कर फादर्स डे. वापस ले बावे तेरी जगह नहीं तू नाप रस्ते. बाप परेशान मेरी आदत से, मोड़ी कहती सुनो मेरे बाल अच्छे. आलस फूक के करूँ पूरे दिन को खत्म. मेरे वही जाते जहाँ पे रकम. बावे तेरी मर्जी विशाल मेरा दिल, मार तो तू पाएगा नहीं चाल में किले. कॉलोनी को जान मेरे बावे बुला किस पर है? कोई उसके नाम पे रपट, जिनकी बातचीत उनके चेहरों से डर. उछलेगा तू तेरा उछलेगा घर, बातों को सुन मेरे हाथों की उंगली से ज्यादा मेरे दोस्त अंदर. बज मत बावे थोड़ा शोर कम कर, फ्रॉड चले काम छोटा कॉल सेंटर.
बावे यहाँ बहुत अंतर, पिन्नक में घूमे बंदे शॉर्ट टेम्पर, गाने मेरे नो सेंसर, बसड़ बुला के दल्ले करूँ तेरा शो कैंसिल। ए शाबाश चिन्हू तेरी कार फिर फरार, Okay. मेरी तेरा नंबर आधार है कि मेरी नीयत खराब। नशा वो बोले तेरी बातें नशा, वो मैंने तेरी दोस्त से भी सुना है। बस मुझे इतना बता कि कौन सा बका या ज्यादा भगा के कुत्ता बना दे, दिखता है सब जगह दबदबा, फटाफट बना बड़ा हद कमाल, चला चल बता तेरे समझ आ रही है कुछ? दिल्ली वाली बातचीत चले सारा दिन, रैपरों का बुना कालीन बना अलादीन, लोहा बेचा जुगियों में ग्राम कले सवा तीन, तीन दोस्त आते हैं आप बीती जबानी। झूठ नहीं अबावे तो सच में अवैक, महसूस करा डर को तो शांति से बैठ, फिजूल मेरे पैसे उड़े पुड़िया के चेक, मजनू को छोड़ लाला सबसे सेट, अच्छा ही लिख पाता गंदी मेरी हैंड राइटिंग, बंदों का अचानक मेरा पेन चाहिए, भी बसड़ों में फंसा मुझे एंजाइटी। जब मेरे बहुत टाइम बाद आए पेश जैसे सप्ताह कूल था, मेरे लंड पे झूल अब कहें तेरी बत्ती सी करे सीधे मौत रूल जब खींच, देख कैसे पढ़ते हैं भूतम, आंकड़े बोलते हैं बहुत लाइक भूकंप, तेरा भाई बोलता है मुंह पर, मैनेजर को बोलते हैं भाई बात तू कर। ओए भाई ये लौंडे काफी अलग हस्ती लाइफ में इनकी फटे माइक से, यूट्यूब रैपर ये बनाते गाने ठीक पर हकते, लाइफ में हमें वो स्टाइल ये बंदे टिक नहीं पाएंगे, बड़े पैसे मांगू खाली मुंह दिखाई के बनू चौड़ा, जैसे मैं और मोदी टाइट है, कुछ भी बोलू लगेगा तो बहुत ही फायर। दिल्ली कत्तर के बावे हम बजने को पूरे तैयार है, सब पे निगाहें पर नजर झुकाए, मतलब रख अपने काम से, दोस्ती के नाम पे नंबर बना रहे बंदे छुपे सांप है, घास मेरे हाथों में ऐप 17 नाम है, जान ले। Listen, किसके लिए था ये? ओह आई एम सॉरी, तीन दोस्त थे तो बातें सुनेंगे, बट ये था किसके लिए? ये बावे बुला किसको रहे थे? बुला किसको थे? Whom are they calling? Please let me know. Please let me know, because there's so much dissing going on here. Not really diss, it was more like they are flexing, and I wouldn't call it a diss, it's more like a warning for them, because they have come so far in their journey right now that they have earned to flex this much. They have earned to flex this much. So I'm really interested to know whom are they addressing here? Is it one specific person or is it a group of people? That I want to know. I opened the lyrics, okay, because I just wanted to just go through few lines, but you know what? The song reminded me of the very first song of Seedhe Maut that I reacted to when I was like, हाँ चलो एक नए आर्टिस्ट में नए हिप हॉप आर्टिस्ट को चेक करते हैं, नमस्तुते. I don't know, I just got like, I was listening to this, I was like, अरे यार ये तो full नमस्तुते वाला vibe आ रहा है. So good, the wordplay, the aggression, the cadence. I think AB17 was third verse. हाँ चल, हाँ फूक भरू कागज में, करेक्ट. उसकी आवाज चेंज होगी तो मतलब यार शायद ये AB17. I don't know who this guy is, but he was amazing. I think this is the only song where another artist is featured, but he was friggin' amazing. I loved it. So yeah, so they brought in everything. They just the flow, you know, different ad-libs, and again says with that little bit of Indian instrument, like when you are using in this kind of beat, little bit of Indian instruments here and there, just the way he has blended those sounds, fantastic. Matlab, I am to like, if I had to fall in love with a production, music production, this would be it. This would be it. If I was given an option to marry a music production, I would marry all the beats produced in this album. I swear, I am not kidding you when I say this. This is the eternal truth. I am just dying at like what is Sez doing, man? I just want to know how did he get this creative? I would want to know if I ever, you know, get him on the channel ever, or Seedhe Maut. But specifically, you know, see with Seedhe Maut, if I ever interact with them, of course the set of questions would be different, where I would want to know their songwriting process and stuff. But with Sez, like I want to have a one-on-one with Sez and understand the journey of the entire music production, like how he thought of, like I would want to ask him about each and every song, what was his perspective, what he had, like what is the raw picture, like what was there on the storyboard when he was like, हाँ इस गाने का ऐसा vibe होगा and this is what we want to convey and this is how I'm going to mix the sounds, like why did he do this, why did he specifically use this sound in this particular song? I would really want to know. I would really want to know. Like just, I think I'm repeating myself after every song that the production is so good. So yeah, let's see. That one line was there na, Happy Father's Day. मतलब किसका line था? I forgot. मतलब he's like, हाँ मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ types. That was the meaning.
I was like, that was so cool. That was so cool. So let me tell you the lines which I personally loved. You can tell me your favorite bar from this, but I just wanted to. I opened the lyrics because I wanted to let you guys know that which are the bars which I loved the most from this. So this one. हाँ मेरे बाप का राज है, मुझे लगा मेरे सर पे ताज है, बहते चले मेरी जब जबान, ये मान सम्मान भी भूल जाए और बोले ये रैपर हमारे जान सम्मान है. I was like, what? Okay, calm down. अच्छा, मिल गया फादर्स डे. ओ ये भी 17 का वर्स था. ओके, सॉरी. सो या बावे चल उठा बसते. आई डोंट नो हु दे आर रेफरिंग टू. हाँ, फूक भरू कागज में बावे तेरी जान बख्शे, मुझे याद कर फादर्स डे. यस, तुम्हारे बाप है. फिर एंडिंग में ओके, एंडिंग वाज काम्स वर्स. सो हाँ, व्हेन एंडिंग में ही वाज स्पेसिफिकली सेइंग कि हाँ ये तो यूट्यूब में बहुत रैप करते हैं, लाइव में कुछ नहीं करते, एंड दिस एंड दैट. सो इनकी फटे माइक से यूट्यूबर रैपर ये बनाते गाने ठीक, पर हकते लाइव में. So I don't know whom he is referring to particularly. I really want to know. Please let me know. So yeah, we're almost at the end. Now we're gonna listen to Teen Dost. I am guessing ये तीन दोस्त are Kam, ABJ and Says. Let's see. And इसमें आर्टवर्क में वो लोग एकदम झरने के ऊपर बैठे हुए हैं. That's interesting. Okay, let's listen to this. Says on the beat, boy. आज जीतेंगे तीन दोस्त, करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, बट वे का सीन सॉर्ट. आज जीतेंगे तीन दोस्त, हाँ करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, What a different बट वे song. का सीन सॉर्ट. पहली बॉल करा क्लीन पोल, गले पे 3 तोले, तीनों भाइयां पिन कोड है, ये बोले हमें पिन बोले. बर्तान मिला पिन चिन के, पकवान मिला चिन खोल के. I can't even think sober, मेरा दिल तोड़ दे. सवा कहीं उठा एयरपोर्ट पे, टोर खत्म गया ज़ेन मोड में. आए घर दोनों छाप छोड़ के, ना आए घर दोनों गांठ तोड़ के. आए घर बेटा FL खोल के, जिंदगी साइफाई तो बहुत है. FL? भाई यहाँ पिन बॉलिंग, तीनों भाई साथ आए भी टॉप पे. आज जीतेंगे तीन दोस्त, करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, Sweet. बट वे का सीन सॉर्ट. आज जीतेंगे तीन बटुए का दोस्त, scenes. हाँ करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, बटुए का सीन सॉर्ट. वो दिन भी वाइब थे, काई की टेंशन Oh. के चाय में कंचे. Did you notice? The raindrops are changing with the beat. हाँ करेगी टीम टोस्ट. I just noticed that. See, the rain slowed down. वो दिन भी वाइब थे, काई की टेंशन बके चाय में कंचे. चक टेलर्स भाई के टापे, यहाँ जब जूते नहीं थे ढंग के. सब स्कूल गए बस में लड़के, वापस आए ट्रैक्टर में तब के. अब हर दिन फ्राइडे टाइट टू फ्लाइट है. 5 स्टार लाइफ ये मेरे लिए नया नहीं है, पुरानी यादों के लिए जगह नहीं है. मैं खुश हूँ मेरा बड़ा भाई सही है, साला अब मैं जैसी कोई कमाई नहीं है. मत देखो बेटे ने तब भाई की है कैसी, मेरे जैसा गंदा टाइम नहीं है. तीनों भाइयों ने बैठाई फीलिंग, आगे पहले जैसी गहरी खाई नहीं है. कुछ साल पहले बोलते थे सेस की छत पे बैठ के कि ब्रो रैप शिट काम करानी तो गांड फट जाएगी. वो जानता है देगा कैसा वक्त, साथ लिखी थी बयान दैट्स चेस टू एंजाइटी. और गुस्सा और डाउट और सबर तरस के थे सुनने को अच्छी खबर. उखाड़ा बहुत कुछ क्योंकि लड़के हैं गदर, सर मार के फाड़ दिया छप्पर. और आज जाके खुश होके लिखूं मैं खुश हूँ सर, खुशकिस्मत महसूस करूँ इस कदर. जब सेस पे है खुद का लेवल और सिट पे है खुद का घर, लाख रुपए हैं टैक्स में भर. और एक लेगेसी है जिसके बल पे सीन बना रहे हैं सबसे हट के. कल शिट SMXS रहेंगे बचते बचते बचते. और तुझे शक है तो लन पे बच पे. आज जीतेंगे तीन दोस्त, करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, बट वे Very का happy to सीन see सॉर्ट. आज जीतेंगे song. तीन दोस्त, हाँ करेगी टीम टोस्ट. 3 दिन के 3 शोज, बट वे का सीन सॉर्ट. I don't know why I like this line so much, बटुए का scene sort. Sis! Wow, beautiful. This is a nice song, and this is a song which I feel. So there are references from Bayan, like this is a song which is sort of like coming full circle because they started from Bayan. That was the first album, and usme like they sort of hit the bullseye and they got the recognition and stuff like that. But you know, वो बोल रहे थे ना कि बयां लिखा because you know anxiety was a very big factor for writing there because they were
they didn't know if it's going to work or not. They didn't know if it's going to work or not. And I feel this with this album, Nayaab, I would like to believe that they have started to go into the path of mainstream. Like they have taken that step now. They have taken that step. I would still say that probably, you know, their journey is probably going to be looked at as pre-Nayaab and post-Nayaab, because I think post-Nayaab this is more, now they're more mainstream. Now they're more, I would like to call them as mainstream now, right now in the scene. Not really underrated, because this album is definitely a game changer. This album is definitely a game changer. And I would want them to also have that kind of viewership that, you know, the OG, you know, rappers have, the mainstream rappers have. So I think they have started that path with this album. I think that journey has already begun. And they're doing so many cool things, because मैं Instagram पे उनके update देखती हूँ ना, they're doing so many cool things after this album, like, you know, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज एंड कुछ तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया था, नायाब वर्ल्ड. They have started something as Nayaab World, which is so cool. I love that concept. So they're thinking out of the box, which I like. They are making, this is what I'm calling a brand building exercise. They're building a brand in a different way, and I think this is the direction that they want to take. The versatility that they have given with this album. This song particularly, I would say that journey coming to full circle of these three boys. First, you know, says की छत पे बैठ के पहले देखते थे कि भाई if this rap shit's not gonna work, then we're gonna be doomed, because this is our passion and we really want to do that. But Says was like the voice of reason, saying नहीं नहीं हो जाएगा, time पे भरोसा रखो, and you know, with time everything happens. And then, you know, talks about their journey, how it happened and everything, like how they're thankful they are now. They're earning their money and they're getting that recognition, they're killing it on the scene. And I feel that soon they're going to go very, very mainstream. And the kind of brand building exercise that they're doing right now after Nayaab and with Nayaab World, it's going to bear fruits in the long term. This is not a, because जब मैंने देखा ना उनका, like the sort of like the marketing strategy that I would like to say maybe, or the brand building strategy. It's more like a brand building strategy. So they are creating a niche for themselves in a very different way. And it is going to reap awards later, for sure. You know, and I जिसने भी ये concept सोचा, I don't know if it was these three only that we are gonna come up with something like Nayaab World, which will give, जो भी join करेगा, will give exclusive streaming and stuff like that. So that's really nice. That's really nice. I'm very happy to see how they're doing it. So now, of course, Dost, so how their friendship has survived through all their entire journey. And now when they look back to it, this journey has come sort of into a full circle, because I feel that this song shows a lot of maturity also, that how they started Bayan, with what intention they wrote the songs of Bayan. It's not in the case of Nayaab. And that's where you see the maturity of an artist. That's great. That's amazing. This album is something else. I'm telling you, their journey and their career in the long term is going to be seen as pre-Nayaab and post-Nayaab, because this album drop is something which is so instrumental and monumental in contributing good music to the overall scene. I'm very happy, very, very happy to see. We need more albums like this, where this is the experimental. You know, when you see, I don't have Bayan to compare it with. I'm only comparing it with Na, जो उनका mixtape मैंने सुना था. And Na also was so versatile. But the kind of versatility that they have given here, it cannot be compared with Na for me. This, I would say, is probably, I would still say this is ahead of its time. This album is still very ahead of its time. अभी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, but I feel this is going to age so well. This is gonna age like fine wine. This album is going to age like fine wine. That's what I truly, मतलब दिल से I believe this. दिल से I believe this. So yeah, we're gonna move on to the outro track, which is called मरने के बाद भी. I don't know why I feel like this song is about their legacy. कि मरने के बाद भी लोग हमें हमारे नाम को याद रखेंगे and all of that. We're gonna leave out a legacy, maybe. Or yeah, I feel that that's the song. So let's listen. मुझे लगा था एंड वाला गाना आते आते बारिश रुक जाएगी, बट नहीं रुकी.
सांसों के साथ भी और मरने के बाद भी रहूंगा उम्र में, चाहे खाल और ये मांस सड़े कब्र में। हम सिर्फ मनुष्य नहीं हैं, राइट। हम एक सदाबहार सनसनीखेज खबर हैं। दोस्तों पे छिड़कते जान, वो मेरी संगत का असर है। दिल में है अगर संस्कार तो वो पैदाइश के तहत है, पर इस दोस्ती और पैदाइश दोनों की हो रही आजमाइश। चीजें बद से बदतर होती पर करूँ ना मैं नुमाइश, बस दबाऊं बातें कुछ दिल में, फिर कोहरे में वो खो जाए। फिर खोजूं कभी खुद को तो बस लगे कि दम घुट रहा है। कभी कभी मैं सोचूं कि मुझे सच में करते हैं महसूस, या फिर निकाल रहे हैं अपना मतलब, कर रहे हैं मेरा यूज। मैं बचपन से नहीं था होशियार, पर अब मैं नहीं हूँ कोई बच्चा। तो जवाब तेरा जो भी, बस होना चाहिए वो सच्चा, और होना चाहिए वो दिल से, और होना चाहिए वो पक्का। अगर तू चाहे कि मैं आऊं तो फिर कह मत मुझे कि मत आ। मिली एक परी ऊपर से और मैंने उसका दिल कुछ ऐसा तोड़ दिया कि भगवान और शैतान दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। हुए कुछ ऐसे हादसे जिन्होंने अंदर से छोड़ दिया, और मन ही मन खुद के पतन का रास्ता भी खो दिया। पर मेरा नाम है 1/2 सीधे मौत, ऑन कोर बैक टू बैक वंस मोर। यानी जो भी करे काम हम Wow, I'm getting the goosebumps. लग चुका है पूरा जोर, और है बहुत ही गर्वम पे साहिल भाई और पूर्वा को। मैंने बता भाई, एक पार्क में साइफर करते थे, मिला मैं वहीं इस बंदे से। पूछा सवाल एक आसान सा, जवाब ना उस पे ना मेरे पे। रुके किसके लिए थे सपने दोनों के एक ही तो थी उम्मीद एक दूसरे से, और दोस्त थे साथ कुछ शुरू से, पर एक दो सांप और पिसू थे। अच्छा। जब घर से दूर था आसपास से यंगी रावल कोड और गुरु थे 18/9। बजता था स्पीकर्स पर हिप हॉप पूरे दिन। याद है जब सीन हिप हॉप पे हंसता था, अब नहीं होते फेस्टिवल्स हमारे बिन। अब देख कौन हंस रहा है, किस पे खा रहा है मेहनत की और नो ड्राई गिन। वही लौंडे जो सड़कों पे साइफर करते थे अब छीत रहे हर दिन। Yeah. और जी रहे वही जिंदगी। याद है क्या बोला था उस दिन में, चैन से खुलती बोतल अब और चेन चमके बनती फिल्में। लौंडे हीरे पावे भूखे थे सीन ही खा गए है दिल्ली में। भूखे थे सीन ही खा गए। का भार उठा के सालों की ली झुका के सीन पूछ रहा है सालों से एल्बम का ये कब निपटाएंगे। यहाँ हम भी कर रहे इंतजार, ये शब्द कब आप तक जाएंगे। और पहुंचे जब याद रखना आप ही की वजह से ये लौंडे छाए हैं। आप ही का तो साथ है कायम एसएम नेशन बाप है भाई। Wow. अब मुझे मालूम Shout out to कि the भक्ति fans. जब एक गीता है, क्या होगा जब 17 गाने फेंके सीधे मौत और सेजो जीतना है। और नहीं Nice होता line. सबर, खोते खुद को ये गाने नहीं लिखे होते। अगर होगा अफसोस नहीं कोई अगर मैं मर भी जाऊं कल, सांसों के साथ और मरने के बाद भी रहेंगे अमर। नायाब। Wow, that's an outro. खत्म नहीं हुआ है। मेघा, क्या तुमने सरिता के बच्चों को देखा है? यार काफी बड़े रैपर बन गए अब तो। गानों में तो गालियां अभी भी रहती है उनकी, पता नहीं सरिता कैसे संभाल रही है। अच्छा। मैं तो घर में ना घुसने दूं ऐसे लफंगों को। अच्छा, ये पड़ोसन होगी। हाँ, मेरी बेटी गई थी उनके शो में। चलो वो सब छोड़ो। ये बताओ कि मीनल ने तुम्हें क्या बोला था पिछले हफ्ते? अरे ये तो वो है पड़ोसन, जो द नोजी नेबर। Claps. What an outro. That's how you do an outro. That's how you do an outro. Wow. I just love that this song did not have beat. It was more like an elan. And you know, they sounded in a way contented also. कि अब अगर मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं। एंड दे सेड कि हाँ, लोग पूछ रहे थे, एसएम नेशन वाज आस्किंग भाई कहाँ है एल्बम, कब ड्रॉप करोगे एंड ऑल ऑफ दैट। बट गुड थिंग्स टेक टाइम गाइज, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। एंड आई एम श्योर आफ्टर ये एल्बम ड्रॉप हुआ, मतलब वो बोल रहे थे ना कि एक गाना आता है तो ही हिल जाते सब, 17 गाने फेंकेंगे तो भाई क्या होगा, मतलब ऑफकोर्स। एंड यू सी कि जब एल्बम ड्रॉप हुआ, यू सी हाउ वेल इट हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द क्रिटिक्स, फ्रॉम द ऑडियंस, एवरीबody. I think from their peers also. Nobody expected this kind of vibe. This is versatility at its best, I would say. This is versatility at its best. I would really love to know their writing process and the, you know, from Says, I would love to know the music process. I know they did a lot of lives, but I don't know if they talked about it. I did not watch it. They came YouTube live में आए थे, but I honestly did not watch it. I did not get the time. Like last week I did not have the time. So yeah, that was the, and I want to know this ending वाला. This is जो वो नेबर या पड़ोसन, I feel ये पड़ोसन वाली है जो उनके सोसाइटी के होते हैं ना, all these ladies who gossip, the gossip mongers, where she's like अरे देखा तो अभी भी गाली वाली देते हैं and all of that. मतलब उनको फिर भी they have become famous, but वही है ना कि मतलब अभी भी जो उनके आजू बाजू रहते हैं उनके पेरेंट्स को सुनाते हैं कि अरे तुम्हारे बच्चे तो ऐसे काम कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. तो आई डोंट नो
what is the context, if it is based on a true story, मतलब ऐसा सच में हुआ उन लोग के साथ कि हाँ अभी फेमस भी हो गए तभी भी उनके सोसाइटी में जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं अभी भी सुनाना पड़ता है. सो सरिता जी इज हुज मॉम, आई वांट टू नो, लाइक ऑनकोर की है कि काम की है, किनकी है? let me know in the comments. But what a beautiful outro. Loved every bit of it, loved the lyrics, and I love the fact that, you know, they are singing, there is a sense of maturity once again in both the songs, Teen Dost and Marne ke Baad. I would club both of these songs as the perfect outros, because इसमें मरने के बाद में भी उन्होंने, they have given shout out to all the friends, their peers who were there with them, and also their fans, SM Nation. So that's great. That was really beautiful. That touched my heart a lot. कि आपसे ही है, मतलब he's being thankful. He's being thankful also. They are all being thankful. They are proud of where they have reached, but they are not forgetting. They are acknowledging the presence of the fans who made them so popular and who gave them all the love. So that's great. So yes, that ends the listening of Seedhe Maut's Nayaab. What a beautiful journey. Honestly, this was one of the best listening experiences of a desi hip hop album that I've had. This is absolutely one of the best experiences that I've had. Like, just the range of emotions that I felt while listening to this, it's a fantastic drop. So it gave me everything from emotion to, you know, headbangers to socially aware, you know, songs, to a little bit of life lessons also, because when I listen to Teen Dost, it also teaches you a lot about friendship and sticking with each other through tough times. That also I felt was very prominently, very well shown in Teen Dost. Like, you need those friendships, you know, एक या दो ही दोस्त काफी होते हैं ऐसे to pull you through those bad times. And if your friends stick by those hardships with you, then you can conquer the world, I feel. And that's the message that was, I mean, वो अपनी बात कर रहे थे, but I was also projecting it in a larger way, that yeah, such friendships are so important. They play a pivotal role in changing the course of your life and in motivating you. कभी कभी पेरेंट्स उतना मोटिवेट नहीं कर पाते जितना फ्रेंड्स कर देते हैं. आई एम श्योर यू probably have, if you have such friends in your life, you're very lucky. You're very, very lucky. So yes, with that, I will end this video here, guys. Share your thoughts in the comments below. I want to know your top 3 from this. It's very difficult to choose. मैं तो पहले ही बोलूँ, very, very difficult to choose. मतलब I feel top songs change होते रहेंगे इसमें. But do share which is the most, like, which is the one song which you loop the most from this album. I would want to know. So yes, with that, I will end this video, guys. I hope you enjoyed this reaction. And yeah, I will see you soon now on my next video. Bye.